Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friend. Welcome to my YouTube channel. I hope all friends are fine. अपने चैनल पे तमाम नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से भी होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रिप्लेस न्यू कंप्रेसर एनिमल। तो जो है वो न्यू कंप्रेसर को कोई भी किस तरह रिप्लेस कर सकता है, तो इसके हवाले से आज हमारी बात होगी। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा वीडियो को देख कर लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए दोस्तों अपना आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। Bearing that in mind, there is an appropriate method and a wrong way to perform an SC unit examination. In fact, there are a number of wrong ways. Several HVAC services providers just do not do a great deal of the during deal of the things that they should certainly do throughout an assessment. Cleaning your coil, inspecting compressor AMP draw, brushing the drain pipeline. These are must-do air conditioner maintenance tasks that need to take place annually. At MasterTech, we do all those things during our air conditioning inspections. We do a whole lot more to air conditioning system inspection basics. Before we study AC inspection essential, we need to obtain a sense of what how to occur when a HVAC services technician executes your examination at one of the most standard fundamental degree and annual AC inspection as well as preventative upkeep checkout need to contain easy number one पे easy stability test for your thermostat air conditioner shut off as well as blower shut off. Static assessment of electric elements, writing links are as required. Static evaluation of supply registered as well as redundant cleansing obstructions as required. Replacement of air filters at the return grills or interior system. Cleaning flushing of drain line plus visual evaluation of drain pan and switch examination for all restriction as well as security control। तो दोस्तों ये था हमारा मुख्तसर सा टॉपिक जिसके ऊपर हमने बात किया कि रिप्लेस हुआ कोई भी कंप्रेसर को रिप्लेस कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। तमाम दोस्त अपना ख्याल रखिएगा।